Can you hear me? जी 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 I think Farah ma'am is there already. She joined in. Yeah. I see the message. Okay. We are waiting for Seher Zama जी and Bushra Masood and जी Dr. Farah Usmani. जी Maybe I'm here. Hello ma'am, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah. I'm here. I can see you. Adab, adab. जी जी Loud and clear, we can hear you. Yeah. जी. Waiting for Seher Zama Okay. and Now Bushra I can Masood. hear you. बुशरा तो दिख Bushra रही है मुझे. Masood, can you बुशरा hear है. me? बुशरा है जी, वहाँ. अस्सलाम वालेकुम. जी, I'm here. वालेकुम सलाम. Assalamu alaikum, Bushra ma'am. Can you hear me, Bushra? जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अच्छा. बहुत ही फेंट आ रही है. बेतम पास. Okay, I think the program has started, right? जी जी. Okay. Welcome. I am Farzana Shahab, an artist. और मैं आज इस मौके पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर सभी खवातीन को बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत ही खास दिन है और RBTC राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव है जो खास तौर से वुमेन के सोशल चेंज पर फोकस करता है, उसको एम्पावरमेंट करता है. और मुझे बहुत खुशी है कि ये ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है RBTC और इसकी फाउंडर डॉक्टर फराह उस्मानी है. मैं उनको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये सब वुमेन के लिए जो ये वर्क लॉन्च हो रहा है, जो कर रहे हैं RBTC के जरिए, तो ये आगे चल के नेशन बिल्डिंग में हम लोग सब लोग खड़े होंगे और पूरा हम लोग ना नेशन बिल्डिंग में साथ देंगे. तो और जो हमारी स्टीरियोटाइप इमेज थी उसको ब्रेक करके और बहुत औरतें आगे आ चुकी हैं, आ रही हैं. उसके RBTC के अंडर में मुझे बहुत खुशी है कि 2 प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. एक तो है आर्ट एग्जीबिशन जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसको मैं क्यूरेट कर रही हूँ और स्पेशली वो आर्ट एग्जीबिशन विमेन के लिए है और इसका टाइटल भी है विमेन डिपिक्टिंग विमेन, हर वॉइस हर विजन. तो विमेन अपने इमोशंस, अपने डिजायर, अपने थॉट को वो एक्सप्रेस कर सकती हैं और उस मीडियम के जरिए सोसाइटी तक वो जा सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एज लिमिट नहीं है एंड फ्री फॉर ऑल विमेन है, कोई भी इसमें अपना वर्क सबमिट कर सकता है. सेकंड जो है प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो डॉक्टर फराह उस्मानी का हम कहेंगे बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, वो है मेंटरशिप का प्रोग्राम है. इसमें जो 100 ऑनरी मुस्लिम ऑनरीज प्रोफेशनल्स हैं वो हर फील्ड के हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे प्लेन उड़ाते हो, ऑथर हो, हर फील्ड के हैं और वो गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे. वो यंग गर्ल्स को उनको पूरा सपोर्ट देंगे हर तरह का और ये भी फ्री है. आप इसके जरिए आप चाहे तो उनसे आप कनेक्ट करिए अपने आप को और इसका एक पूरा फायदा उठाइए जाके वो लोग भी एजुकेट हो सके और उनको भी आगे गाइडेंस मिल सके. इसके लिए मैं अब जो है बहुत ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी. यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं हमारे पास वो हैं डॉक्टर फराह उस्मानी है, फाउंडर ऑफ RBTC एंड शी इज हेल्थ एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट और वो जो है UN सिविल सर्विस में हैं और उन्होंने हमको US से ज्वाइन करा है. फिर हमारे साथ बुशरा मसूद हैं, ये आर्ट थेरेपिस्ट हैं, खुद भी आर्टिस्ट हैं, आर्ट थेरेपिस्ट हैं और इनका इंडिया में और ग्लोबली भी ये वर्कशॉप करती हैं और इस बहुत ही फैजियाब लोग हो रहे हैं. बाद में आपसे बुशरा पूछेंगे कि आप कैसे ये कर रही हैं. हमारे साथ एक यंग आर्टिस्ट हैं और बहुत ही वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और इन्होंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव वर्क करा है और इनका वर्क स्पेशली विमेन के ऊपर इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो वर्क करा है. उससे भी इनके बारे में पूछेंगे कि इन्होंने क्या वर्क करा है और क्या सोच के करा है, क्या किससे इंस्पायर हुई हैं. तो हम लोग मिलते हैं. हमारे पैनलिस्ट में अभी और भी लोग इसमें ऐड होंगे बाद में. तो डॉक्टर फराह
उस्मानी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है आपने ही इतना बड़ा ये जो आरबीटीसी का राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग का एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है फॉर सोशल चेंज। विमेन का सोशल चेंज बहुत जरूरी है, एम्पावरमेंट का, यंग गर्ल्स को पढ़ाने का, एजुकेट करने का। तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या नजरिया। वैसे तो आप हेल्थ और डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और लेकिन ये आर्ट से रिलेटेड सवाल है, तो आपका क्या नजरिया है। हाउ डू यू सी द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड सोशल चेंज। आपके हिसाब से आर्ट और सोशल चेंज में क्या ताल्लुक है। जी नहीं, शुक्रिया फरजाना। एंड थोड़ा सा म्यूट कर लें, बाकी थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ, सो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सब लोगों को, पैनलिस्ट को और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको इंटरनेशनल विमेंस डे की मुबारक। और इट इज़ रियली माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू जॉइन दिस एस्टीम्ड ग्रुप हियर of artists, and we can say hello, yeah, happy new year to you, Renu Bhargav. Thank you for joining. And so what we are saying here, जो आपने question पूछा है, so yes, so हम जो development में काम करते हैं, so the critical part of the development is related to changing the social norms, जैसे health के हो, including things, basic things like smoking की आदत छुड़ानी हो, या women में early marriage का कोई issue है, या gender based violence का है। so जो social issues हैं उनका norm community में change is part of positive change is part of development. But when we work in development, we are doing research कि root cause क्या है इसका, लॉज क्या चेंज करनी है। तो हम सोशल नॉर्म को चेंज को टैकल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कम्युनिटी से बातचीत कर रहे हैं, उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, लीगल एडवोकेसी कर रहे हैं कि लॉज अच्छी बने तो चेंज हो सोशल नॉर्म्स। तो हमारा जो नजरिया है social change or uska, it is through these areas, including what we call social marketing or behavior change communication. Now, what is art for social change? This is so this is social change through a development perspective. Now, art for social change मेरे हिसाब से वो आर्ट है जो इंटेंशनल एनालिसिस करके बनाया जाता है कि हम एक सोशल इश्यू को उभारेंगे, चाहे कुछ वो भी हो विमेन के इश्यू। तो वो जो आर्ट बन रहा है वो उसका एक विजन है और वो एक इंटेंशनल तरह से बन रहा है, लेकिन उस नजरिए से इट कैन इवन बी बेस्ड ऑन रिसर्च और इट कैन बी बेस्ड ऑन द आर्टिस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दैट द फीलिंग पार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हम ये कहते हैं इसमें हम आर्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट में करते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन में हम आर्ट को, यहाँ पर आर्ट की डेफिनेशन, हम आज तो विजुअल आर्ट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आर्ट की डेफिनेशन होगी फिल्म का आर्ट, पोएट्री का आर्ट, कार्टून्स में बनाने का आर्ट, सॉन्ग का आर्ट, ड्रामा का आर्ट, स्टोरी टेलिंग का आर्ट, दास्तान गोई का आर्ट, कॉमेडी का आर्ट, इंस्टॉलेशन का आर्ट, फोटोग्राफी का आर्ट, स्कल्पचर का आर्ट, टेक्सटाइल का आर्ट, पपेट शो भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। तो ये आर्ट है। अगर नुक्कड़ नाटक हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर सोशल चेंज, and because we are using a drama theatrical thing to create a change about using sanitary pads or whatever the theme of the nukkad natak is. Then जो हमारा वो होता है क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उसमें तो एक टर्म वेरी रिसेंटली 2011 में क्यूरेट हुई है, क्राफ्टिज्म। मतलब क्राफ्ट को एक्टिविज्म से ज्वाइन किया, उसमें क्रोशे करें या वो करते हैं, ये क्विल्ट्स बने, HIV एड्स का क्विल्ट बना, तो उस क्राफ्ट के जरिए उन्होंने वो इश्यू उभारा उसकी डिस्प्ले से। तो दैट बिकम्स also art for social change, but sort of craft and craftism, so उसमें like I'm saying कि there is, but in each of them the art, whatever the art is, the quilt is stitched, is made with the focus कि ये हमें ऐसे यूज करना है। उन्होंने विजन बना लिया है कि ये आर्ट हम इस तरह, इसको हम ये दिखाना चाहेंगे और ये करना चाहेंगे।
एंड उसमें हम ये रिफ्लेक्ट करेंगे. अच्छा, now let's get back to all of your expertise areas of visual arts. So all of you are using powerful imagery, colors, hues, you know, to put out that issue, which is reflecting and becomes a kind of the uh, social advocacy to shift the thinking of the society. तो लेकिन ये होता कैसे है? मैं सेकंड पार्ट में जाऊंगी. तो अब हम ये तो कह रहे हैं कि ये तो हम समझ गए कि ये है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ये आर्ट से सोशल चेंज आएगा? होता क्या है? सो देयर आर सेवरल पाथवेज इन विच. तो एक पाथवे ये है कि जो आर्ट है वो हमें इमोशनल लेवल पे अगर रीच कर रहा है, हमने कोई आर्ट देखी, वो हमें इमोशन कर रहा है. अगर हमने किसी चीज की जैसे कि आपकी एग्जिबिट में एक फोटो है लिविंग विद एसिड, लाइक एसिड अब्यूजर का, तो वो हमें अगर इमोशनल टच कर रहा है वो वाइब, उसको देखने से वी आर सीइंग दिस वल्नरेबल फेस ऑफ द वुमन, एंड देन वी द आर्टिस्ट चैलेंजेस अस टू से कि ये ठीक चीज नहीं है, इस पे अटेंशन पे करिए कि ना हो. So it hits in the empathy, and the empathy of that situation will influence and cause the change in at an emotional level to that person, where the person will get engaged in there. The second area is that visual art, including murals and all, mostly public art, they also provide a template for raising an issue which you can't talk about. तो आर्ट जो है, जैसे आप बहुत सारी चीजों कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते उसके बारे में, है ना, बिल्कुल जोर से ऐसे नहीं करना चाहते, लेकिन थ्रू द आर्ट आप वो टेम्पलेट है आपके पास, सॉफ्ट टेम्पलेट. बिल्डिंग के बाहर, यहाँ है न्यूयॉर्क में बहुत सारी बिल्डिंग्स के बाहर उन्होंने पूरी पेंटिंग करी हुई है ऑन एन इश्यू, वेदर इट इज ब्लैक लाइव्स मैटर और वेदर इट्स एनवायरमेंट. So through this soft part, you are making everyday people who are जो गुजर रहे हैं, that art is creating that in the changing their opinions related to whatever issue you want to highlight, transgender, etc. And so it is helping to translate those changes in there. Let me end by giving some of the examples that have sort of touched my heart. So, and this is actually a very well-known sculpture in the UN building. We have several arts which are donated by the countries, and all of them, obviously, because they are donated to the UN building, are depicting a social issue. So, एक बहुत famous है, वो आप लोगों ने भी सुना होगा, उसका नाम है Knotted Gun. वो बहुत famous है. It is one of the most global famous. तो वो गन का बहुत बड़ा सा स्कल्पचर है, उसमें आगे बंदूक जहां है वहां गिठान बना दिए आर्टिस्ट ने. So it is a semblance of non-violence. When you enter the building, you are seeing this structure of which is giving this message. And we had several, including photography exhibitions on a particular theme, which were even they can be a little disturbing, this art. When you see violence wala art, if you see the violence in conflict countries and you see the art, it can be very disturbing, but it is putting out there the issues and the reality check which the artist wants to give to the viewer, that you cannot be silent in that. एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का, जिसमें कि उन्होंने एक सोते हुए आदमी का ग्लास स्कल्पचर बनाया है सड़क पे, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस दिखाने के लिए. इट्स अगेन अ वेरी फेमस स्कल्पचर एंड इट लुक्स अ रियल पर्सन रजाई ओढ़ के सड़क पे लेटा है, और वो स्कल्पचर सड़क पे ही है. सो आपको लगेगा कि ये सचमुच में कोई लेटा हुआ है वहां पर. So reality, and also that basically what I want to say is, and here in your art exhibition, Aparajita Tiwari's title, I don't know if you'll be able to show it to the viewers, where she's talking about life in acid, can actually showcase similarly about
about this. Now, in terms of our art exhibition, which you are curating, I see the women depicting women is very, located at the intersection of art and social change, and the expression of the accumulated history. So the women artists will share their personal and public, what their feelings, and capture it as a woman, and that those private and public spaces will give us, the lived experience of the women in the local context, and a powerful opportunity to really study the submissions, to see that where the current thinking of the women artists is going in this direction. When they depict women, what do they see? And it will depend on the life's experience of the person, of course, and what their context is. But it will, and overall, if we have these 100 art pieces, can tell us that what is the story happening in these women's lives, who are, expressing their personal and private through this. And yeah, I can come back again, but maybe I'll stop now to hear the other panelists. Yeah. जी, आपने बहुत ही अच्छे ये पॉइंट्स बताए कि आर्ट पे क्या किया है और किस तरह से जो फीलिंग, इमोशंस, सभी कुछ उसको बहुत असर डालती है आर्ट। और आर्ट पे बहुत ग्रेट मूवमेंट्स भी हुए हैं, फ्यूचरिस्ट, डैडिज, जिसने पूरा उसको हिस्ट्री को बदल के रख दिया था। इतना स्ट्रॉन्ग टूल है ये आर्ट जो है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने हमको इसके बारे में बताया, डॉक्टर फराह उस्मानी। और इस बीच हमारे साथ सहर जमा आ गई हैं। सहर जमा, वेलकम सहर जमा। Thank you very much. Good evening to everyone. आपको भी वुमेन्स डे जी, आप सब गुड इवनिंग। और मैं जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सहर जमा जो है वो एक तरह की आर्ट है, बहुत स्पेशल आर्ट है। चंपक पत्ती उसकी फाउंडर है और आर्ट जर्नलिस्ट भी हैं। और इन्होंने बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जैसे MF हुसैन और रजा, इन लोगों के साथ काम किया है। और सहर जमा का वर्क जो है वो म्यूजियम में भी है और इंटरनेशनल जो मोस्ट 100 जो बेस्ट पब्लिकेशन में इनका नाम है। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सहर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो आप भी आर्टिस्ट हैं और आपको अपने क्या वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, या आपको लगता है कि वुमेन को आर्ट में, इस फील्ड में क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप? Ji, actually the thing is that whenever women enter a professional area, whether it's entering journalism or the world of arts or design or corporate world, सबका एक single सारे spheres में ये challenge होता है to be taken seriously. So because अगर आप बहुत ज़्यादा serious profession enter कर रहे हैं, अगर corporate world है, journalism है, because these are more stronger established industries, so you are taken more seriously कि आप वक्त निकाल के you've taken up this profession and you're doing it and you really mean it. फर्क इतना है that when you enter the arts world, because it's not such an established industry or such a strong industry, so for your art and for your work to be taken seriously, उसमें double the effort होता है. मतलब because I have belonged to both worlds of the news media as well as the arts. Journalism में ऐसा कोई issue मैंने देखा नहीं था, but when you enter the art world, थोड़ा सा फर्क पड़ता है because art as a profession in itself लोग समझते हैं कि हल्का फुल्का काम है, यूं ही तफरी में काम किया जा रहा है, you know, I mean, what is the purpose of it? But that had been my whole, somehow it just became a mission that the work of arts should be taken seriously. And in the process, I also became an artist one day because there was so much assimilation of what I was seeing in
MF Hussain studio, in Raza's studio, in Satish Gujral Saab's studio, while they were working behind the scenes, हफ्ते में 2-3 बार किसी ना किसी बड़े आर्टिस्ट की स्टूडियो विजिट जरूर होती थी for the art stories and documentaries that I used to work on. तो वो इतना ज़्यादा assimilation हो गया that it just came out of me one day. So in that process, I also started creating work of arts. तो मगर आपका जो सवाल है कि किस तरीके के challenges थे, यही एक चैलेंज था कि अगर मैंने जर्नलिज्म से हट के साइट पे अगर आर्ट का काम शुरू किया, I have started creating works of art and I want to establish it as an art brand, as an art entrepreneur. That has to be taken seriously, and the test of being taken seriously is that you manage to have partnerships, you manage to have liaisons with corporates, with sponsors, with brands who want to showcase your work, who want to commission your work. That becomes the real test then, whether or not you're being taken seriously or not. तो वो एक चैलेंज रहता है कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो लोग समझें कि ये तफरी का काम नहीं है, इसमें वक्त बहुत लगता है, इसमें वक्त बहुत लगाया जाता है, and there's a lot of thought that goes behind it. That was also what I tried to communicate through all my art stories that I did on artists. कि डॉक्टर फराह भी जो कह रही थी, art activism is so important because we tend to forget, art is a very silent, it pushes you very silently, और आपके जहन में कैसे बस जाता है आपको पता नहीं चलता, because it's not strong in your face activism, आप कहीं बाहर जाके मोर्चा नहीं लगा रहे, आप कहीं जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे. आर्ट एक्टिविज्म जो होता है बहुत सटल होता है, मगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा डीप होता है. वो आपके अंदर जब एसिमुलेट करता है, it tends to I won't say manipulate, but it tends to influence your thoughts much more deeply than compared to a protest that you've seen happening in 1 or 2 days here and there. And art has always been a testimony to our times, of a reflection of our history, a reflection to atrocities that are happening in our contemporary history. And it's always that it takes some time to make works of art, मगर जब वो बनते हैं, जब लोग देखते हैं, that is one of the reasons why Guernica, that was made by Pablo Picasso, is so strong even today. In the midst of the Ukraine war, people now sharing images of Guernica by Picasso, which is on view at permanent view at MoMA, and I'm sure Dr. Farah has already seen it there. Yes, Civil War, Spanish Civil War. बिल्कुल. और कब के पीछे बड़ा अच्छा लगा हुआ है शहर. हाँ, but it's not virtual background में becoming. अगर बताइए उसके बारे में. Sir, please tell about your चमक पत्ती's work. But very interesting work, कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत अच्छा होगा कि ये आर्ट भी सब लोग जाने, आप जरूर इसके बारे में. So चमक पट्टी जो है actually थोड़ा बताइए. जी, तो जो नाम है चमक पट्टी, दैट इज द कोलोकियल ओरिजिनल टर्म. जो मेरा मीडियम है, इट्स रिफ्लेक्टिव स्टिकर. और जो ट्रक्स पे और रोड साइनेज पे जो लगाया जाता है, which is sheets of that reflective sticker that glows in the night, because when the headlights fall on it, और वो tangentially एक एंगल पे अगर गिरती है, तो it glows in the night. So that is how you can read the road signs, or that is how you can say कि अंधेरे में हाईवे में एक ट्रक चल रहा है. So it is used a lot on truck and road signage. तो उसका colloquial term ही है चमक पट्टी. So I do a lot of leaf patterns, तो सब लोग पत्ती बोलते हैं, thinking that it's leaf, but it is actually पट्टी, which means sticker. And chamak is reflective, so it's literally that colloquial term that I just picked up to use for my art brand when I started out in 2011, and it was also the kind of messaging that I wanted to give, because contemporary art में जिस circles में मैं घूमी हूँ, modern and contemporary art में, in gallery spaces and in Christie's and Sotheby's auction houses and all of that, थोड़ा सा जो art frat जो होती है, art fraternity, उसमें एक sense of exclusivity आ जाता है, which is very unfortunate and which works against the purpose of art. थोड़ा सा arrogance और exclusivity आ जाती है उसमें, बहुत ही ज़्यादा upper crust हो जाता है. So इसकी वजह से a lot of good artists who don't manage to enter that sphere of society are left out and lose out as well.
So when I started using this medium, I used this medium because it came in so many different colors, and it was so vibrant, and it just automatically made you so happy. And whenever people saw my works, they said that there's so much happiness in it. जी इसके जी रंग जी खूबसूरत है। इतने और खुशनुमा रंग हैं, सो ब्राइट। वाकई में आपने कहा कि बड़े खुशनुमा रंग हैं और बड़े खिलते हुए हैं, और बहुत ही इसके जरिए, आर्ट के जरिए आप एक सोसाइटी में इसका भी एक इम्पैक्ट है, पड़ रहा है जी लोगों पे। जी जी, तो बहुत अच्छे। जी, जो एक बात जो मैं कहना चाहती थी बहुत जल्दी से, जो हाँ, मटेरियल है बताइए। रिफ्लेक्टिव स्टिकर, कि वो उस तबके से आता है। इट्स लिटरली अ स्ट्रीट मटेरियल व्हिच इज यूज्ड बाय ट्रकर्स, एंड दैट मटेरियल आई हैव यूज्ड एंड ब्रॉट इट इनटू high-end luxury art. So I've kind of tried to break barriers by using this material as well. And at the same time, the themes that I've worked at, because I'm always so closely involved in current affairs and all, I've always tried to work on themes that have been burning issues, like the migrant laborer issue. In fact, जब आप पूछ रही थी, जो मैंने पीछे जो तस्वीर लगाई है इसकी, this is actually a laborer's bowl. वो जो एल्यूमिनियम का जो बोल होता है, जो सर पे उठाते हैं, जिसपे वो सीमेंट और रेडी मिक्स करते हैं. So it's actually that bowl which I have inverted and spray painted and done these patterns of work. So it's actually a tribute to the beauty of the laborers and the kind of work that they do day in day out, and they're really silent, invisible people. And this was evident during the lockdown that we had in India in 2020. There's such an invisible population कि जब पूरा lockdown हुआ और हजारों की तादाद में सब भीड़ निकली वापस घर जाने के लिए, तब हमें पता चला कि there's so many of them living amongst us और ये नजर नहीं आते हैं, and they silently keep building homes and building our homes, building our roads. So that was my tribute to the laborers, by using the laborers bowl and beautifying it and putting it in prominent spaces. Other issues, I have spoken on the plight of truck drivers as well. It's a very lonely life out on the road. There are a lot of challenges that they face. I had done a work on the Arab Spring as well, starting 2010 up to 2012, जो Arab countries का जो revolution था. So it's of course always been about very consciously bringing into white cube spaces, as art gallery spaces are called, white cubes, in bringing in a lot of activism and food for thought in these white cube spaces. हाँ, ये आपने सही कहा कि जो हमारे जो साइलेंटली जो वर्क करते रहते हैं, उनको सलाम है कि उनका जो जज्बा जो दिखाई नहीं पड़ता है वर्क, और उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश करी। थैंक यू सहजमा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट बुशरा मसूद हमारे साथ दुबई से यहाँ हैं, जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये एक थेरेपिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट भी है। तो हम इनसे, और ये इंडिया में भी और ग्लोबली इनके वर्कशॉप होते हैं, ये बहुत काफी वुमेन्स को और गर्ल्स को और बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ये दे रही हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे एक आर्ट जो है किस तरह से थेरेपी हो सकता है, और इसके लिए आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं आर्ट को एज अ थेरेपिस्ट, किस तरह से यूज करती है, इसके बारे में आप हमें बुशरा कुछ बताइए। Very good evening. Can you hear me? Am I audible to everybody? I hope I am. Yes, So I can very hear you, happy Bushra. International Women's Day to everybody today. And it's a pleasure to listen to such a nice conversation between all of you. So I gained a lot of insight about art today. So the only thing is that art as such, art therapy, as we speak about it, it is basically dealing with mental health issues. And mostly it is prevalent among all women, everybody, like we are suffering something like anxiety, depression. All these things are normal nowadays, nothing like unusual that we are facing all these challenges in our lives. And especially women face, I think, all these things more because they are, I guess they don't have that kind of access to facilities still, that there is a stigma associated with mental health, that you cannot, go out and seek the help of a psychiatrist. There's a taboo related to that. And then they are somehow cut off from the society, thinking that they are, crazy or not fit. So what happens is art is a good coping mechanism. It's a good, healthy coping skill for any of these,
because we have made this stigma in our society, we have created this stigma in the society that we cannot deal with these issues openly and discuss about them. So now what happens when you're not able to communicate with your family members, you're not able to discuss your issues, what happens? You need a medium of expression, a means of communication to express these things inside you. So we conduct these workshops, and wherein we provide different kinds of exercises, like art journaling is there. There is affirmative art. There is also Zentangling and doodling sessions on workshops. We have workshops on that also. So currently I'm in Dubai in UAE. So here in the Dubai International Arts Center, we had few workshops on the same thing. So art therapy, where we also had teenagers, also had women joining, and different age levels were joining for these workshops. So basically these that is how I feel I'm contributing as in a social way, because most of my workshops, like, we don't charge them through the NGOs. Like in Nurture Life, I'm the art therapist. So whenever I go out, I want to help people who are facing these issues. They cannot, go access expensive psychiatrists. They don't want to go and talk about it. So they just join online also on the Zoom workshops, and whatever knowledge I can impart to them, how they can use art therapy to help combat all these symptoms of anxiety, stress, and depression. So I guess we all face all of this, but we don't talk about it. So it's better that we access some kind of help, and we don't have to necessarily go about singing about your problems, but you can get help in different ways. So art is a good mechanism, and I discovered it's very meditative also. So it helps in relieving stress, in managing your emotions, all these things. I guess Dr. Farah Usmani also knows that Muniba Mazri, who's a Pakistani ambassador for UN, that she had undergone an accident, and she managed to, she had an injury in a spinal cord. So she went she became an artist, and she does all these causes. So plus Frida Kahlo also had the same story. In her life also, she faced disability. Therefore, she, through her paintings, she used to express all the pain inside her. So when we talk about women empowerment, we talk about the problems we have with women today. Just a second, can you ask? So just a second, please. So the thing is that I'm very sorry, there's a little disturbance in the background. So these women, actually, on their level, they came out with their art. They expressed whatever was going inside of them, the trauma they were facing in their lives, and and also, like the males, if you talk about Vincent van Gogh, he had mental illness, and also a lot of artists underwent all these crises in their lives, and they resorted to art as a way of self-expression. Not only the women, also the men. So I guess this really helps in elevating the happiness hormones in your system, which is like the dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin, because all the sciences that we study, the neuroscience, it connects art to, the brain waves that that the studies show, the analysis show, the brain waves actually show that it improves emotional well-being. It is the same effect that medicines produce when you take medications for, for the same things, so the same problems. So that is how it really helps people. And on my level, I am doing this because that is the only level that I can actually, from my side, that is my input in the society at the moment. बुशरा, आपने बहुत सही कहा कि आर्ट में फ्रीडा कालो, वैन गॉग और पुलक, जैक्सन पुलक, ये सबको थोड़ा सा ये डिप्रेशन या प्रॉब्लम थी, और उन्होंने ओवरकम करा अपनी इस आर्ट वर्क से। और स्पेशली फ्रीडा कालो, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद वो तो बिल्कुल बिस्तर पे थी, लेकिन उनकी ये आर्ट ने उनको थेरेपी इतना जबरदस्त करा कि वो इतनी ग्रेट आर्टिस्ट बनी आगे चल के। तो अब जो है जी, तो आप अपने आर्ट का कुछ वर्क दिखाना चाहेंगी? Yeah, there are a few canvases that I have here. This is a canvas which depicts some Zentangle doodle art. If you can get the full picture of this. These are lines, patterns, and designs which are made on the canvas. And there is
an affirmative art canvas which shows a woman empowerment theme, shows I am who I am and your approval is not needed. So Wonderful. these Right, kind right. of these kind of things help. Also, you can paint landscapes, you can resort to collage making, you can do digital art, because digital art is really gaining ground, because nowadays with the NFTs and all coming up, even that has a good market. So these things are there. It's not just limited to one thing. If you're into art, you could really explore into various avenues. It's not just this traditional painting on canvas. This is just one part of the art, but there are certainly, like, young teenagers are making a lot of money through digital art nowadays. So I think there's a lot of scope in art as well. जी जी, और सही कहा बुशरा के बहुत ही स्कोप है और नई नई चीजें इसमें आ रही है, लाइक जी, जी, जी। एनिमेशन और जी, डिजिटल जी। आर्ट, जिसका अब आज जमाना उसी का आगे बढ़ रहा है और होना भी चाहिए चेंज। बिल्कुल। बहुत अच्छा है, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि कैसे आर्ट के जरिए थेरेपी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। हम सुबुई खान हमारे साथ हैं और ये बहुत ही एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही फिगरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव वर्क में इनका काम बहुत अच्छा है। इन्होंने RBTC की जो आर्ट एग्जीबिशन है उसमें अपना वर्क भी सबमिट करा है। तो सुबह ही आपसे हम पूछना, एक तो आपके आर्ट के बारे में भी पूछेंगे, जो आपने वर्क सबमिट करा है उसके बारे में बताइए, और दूसरा आप ये बताइए कि जैसे कि नॉर्मली सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर या अदर फील्ड चुनते हैं, लेकिन आर्ट को एज अ हॉबी लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्ट कैसे इंस्पायर कर सकता है कि मेन सब्जेक्ट उसके लिए गर्ल्स को, ये एम्पावरमेंट आर्ट के जरिए क्या आप कहना चाहेंगे? आपके क्या व्यूज हैं? I think you are muted. हाँ, हेलो, सुबह सुनाई नहीं दे रहा है, आप वो हाँ Thank you so much. Good evening, everyone. Sahir ma'am, हाँ, Bushra सुनाई ma'am, पड़ा, ठीक। Farah ma'am, thank you so much. I feel very privileged आप लोगों के बीच में बैठी हूँ and I'm here to share my thoughts. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा लफ्ज है. It is so wide, it is very wide. मुझे कोई आर्टिस्ट कहता है, मुझे gives me goosebumps actually. क्योंकि you cannot समेट नहीं कर सकते. दुनिया में इतनी आर्ट है हर तरीके से, हर म्यूजिक में, क्राफ्ट में, जैसे हम सब बैठे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग वो आर्ट के एक्सपर्टीज हैं. तो मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरा जो फील्ड है, बेसिकली मैं एक्रेलिक ऑन कैनवस करती हूँ. मुझे फ्लावर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मुझे बहुत फैसिनेट करता है. रियली गेट इंस्पायर्ड विद नेचर. मेरी ज्यादातर आर्ट जो है वो नेचर इंस्पायर्ड है. फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स की जो उसकी वो कितने डेलिकेट होते हैं, उन कितने येट स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे हैव द वाइब्रेंस, दे हैव द फ्रेग्रेंस. कोई भी फूलों को देखता है, दे गेट इंस्पायर्ड. उन्हें हमेशा कोई मुस्कुराते हुए देखता है, उससे खुशी मिलती है, इंसान को एकदम छू जाता है उससे. और इतनी छोटी सी चीज इतनी खुशी देती है सबको, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है. तो अभी तक मेरे जितने भी आर्ट वर्क्स हुए हैं वो ऑयल बेस्ड हैं और एक्रेलिक के. मैं दूसरे मीडियम भी काफी इस्तेमाल में लाई हूँ. चारकोल है और चॉक पेंट्स है, उससे टेक्सचर अमेजिंग आते हैं. आई रियली लव दैट. और मैंने स्पेशली जब मुझे फरजाना मैम ने मुझे बताया था कि यहाँ पे वी आर वर्किंग फॉर दिस कंसेप्ट राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. और उन्होंने बोला वुमेन डिपिक्टिंग वुमेन इज द थीम इसकी. तो पहले आई वाज लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि आई नेवर वर्कड विद द ह्यूमन फिगर्स और ह्यूमन, मैंने ऐसे कभी नहीं बनाया था. बट it's like it's an artist, you just throw colors on the canvas and the thing just comes up, pops up. तो मैंने जब बनाया उसके पीछे द कंसेप्ट, एक मैंने पेंटिंग है जिसे मैंने नाम दिया है अनफोल्ड. Instead it is no stopping. और उसकी थोड़ी लाइंस हैं जो डिपिक्ट करती हैं उस पेंटिंग को. I would like to share. Like a bird or a flower, my fragrance I shower. Like the moon on a cloudy night, I rise. Like the chirping birds and bright sunshine, like a little secret dream of mine, I rise. आप देखेंगे अगर पेंटिंग को, तो हो सकता है ये जो एक्सप्रेशन मैं देना चाह रही हूँ वो रिफ्लेक्ट होगा उससे. और एक दूसरी मेरी पेंटिंग है, उसे मैंने नाम दिया है विंग.
और उसके लिए भी थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं, मेरी बहन ने मुझे अपने एक्सप्रेशन को कंपाइल करने में हेल्प करी है। I'll do my duties happily. I have hope in my eyes. My dreams will drive my passion, and then like air I rise. जब आप सब घर के बाहर के काम निपटा के आते हैं, you just close your eyes, और वहां पे जो आपके चेहरे पे सबसे नाजुक और कीमती चीजें आपकी पलकें, वो एक पंख की तरह फैल जाती हैं. This is what I'm reflecting through my paintings. That you can go further. और मेरी पेंटिंग्स में I have compared the women with flower. जो हेनरी बीचर का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत उनका एक स्टेटमेंट है, flowers are the sweetest thing God ever made and forgot to put soul into it. I have added on it, the soul is completed by the women. तो this is the unconditional लव जो हमें मिलता है फ्लावर से, पेंटिंग से. इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी. मैं सुन रही थी सबको मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी. मैं जब कलर्स के साथ होती हूँ, आई रियली एंजॉय इट एंड आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स कम्स on the canvas. So it's really, I'm not able to understand it, but it's so nice you able to express what you're painting. And I really want to reflect what the message जो मैं चाह रही हूँ पेंटिंग से देना, वो जो देख रहा है इंसान, if I'm able to communicate that well, then I feel yes, I have achieved making that painting. और आपका मैम फरजाना मैम, जो आपको पूछना था आर्ट मैंने क्यों चुना, पहले शुरू से ही मैं रुझान थोड़ा, I was on the creative side of my life. मुझे हमेशा से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत इंटरेस्ट था. मुझे जब भी मैं चलते हुए घर आती थी, गार्डन में थोड़े से लकड़ी के पत्ते, कुछ भी फॉलेज मिलता था, आई यूज्ड टू कलेक्ट दैट. और उसे कलेक्ट करते हुए आई यूज, दैट्स व्हाट नेचर हैज इंस्पायर्ड मी. वो कलेक्ट करते हुए, चाहे वो सूख जाए, उसके ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं, आई यूज्ड टू कैरी दैट टू माय होम. आई हैव, और उसके देख के आई यूज्ड टू गेट कि कितनी चीजें हैं, इतनी सी चीज नेचर ने उसमें कितनी मेहनत डाली है, कितना उसने काम किया है उसे उभारने के लिए. तो व्हाई डोंट वी डू इट? भी हमारे अंदर नेचर हैज डिजाइन्ड अस एज मल्टीटास्कर्स. उन्हें हमारे दिमाग को ऐसा बनाया गया है. तो बस उसे थोड़ा सा एक एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि आप वो कर सकते हैं, टू मेक द डिसीजन द वन कैन डू. सो दैट्स व्हाट हैव हेल्प मी टू दिस. और आपने चांस दिया फरजाना मैम, उस पे ऐसे आने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मैं अपनी आर्ट को दिखा सकूं लोगों को, और जो उससे कोई मैसेज भेज सकूं जो मैं चाह रही हूं, और कोई उससे इंस्पायर हो सके. It helps in social building, social. Yes, please. तो आप क्या कहते हैं सुबुही, क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग गर्ल्स को? आप इतने अच्छे नेचर और फ्लावर्स और सब तरह के उसमें आप वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा है. तो आप यंग गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देंगी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैसेज तो मतलब यू आर ऑल्सो यंग, बट जो टैलेंटेड जो न्यू जनरेशन जो बच्चे आ रहे हैं, या उनके लिए जी फरजाना मैम, मैं यही कहना चाहूंगी, whatever you do it with your full heart. If you do it with your full heart, you will do it selflessly. And when you're doing it selflessly, वो चीज हमेशा उठती है, वो कभी नीचे नहीं आती. If you're doing selflessly, and it's always been grabbed by other people, they really connect with the selfless beings. इंसान में एक अंदर जो दिल को छूती है चीज जो आप देखते हैं, वो सेल्फलेसली और 100% इंसान ने अपना 100% दिया है. नो वन कैन कट दैट डाउन. सो ये है कि जो चीज करें आप, वो अपने पूरे दिल से करें. जिसमें आप पूरे दिल से करेंगे तो वो चीज जाहिर सी बात है आपकी सब चीजें जुड़ने लगती. बहुत अच्छा आपने कहा सुबुही, और सही कहा कि वो डेडिकेशन और दिल बहुत जरूरी है, पैशन कि उसमें आप घुस जाइए और फिर भूल जाइए और लगे रहिए. बहुत आपने अच्छा कहा, थैंक यू. और हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे बहुत से मैसेजेस लोग भेज रहे हैं, दोस्त और हमारे व्यूवर्स. उनका हम शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव है. इट्स नॉट ओनली आर्ट, बट इतनी चीजें आर्ट की हैं जो अलग अलग आप सब लोग बता रहे हैं. तो हम कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे. रेनू भार्गवा जी हैं, उन्होंने लिखा है, गुड ईव लेडीज, हैप्पी वुमेन्स डे, जस्ट अ क्विक हेलो एज आई एम बोर्डिंग अ फ्लाइट टू लखनऊ. मोहसिना आरिफ मिर्जा ने भी लाइक करा है. देयर इज तस्नीम रहमान, हेलो एवरीवन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. वफा खान जो है वो
सऊदी अरब से है, उन्होंने भी बहुत लाइक करा है इस शो को और बहुत इंफॉर्मेटिव है। रितिका जायसवाल ने कहा है, सो हैप्पी टू सी रियल वुमेन ब्रेकिंग द रियल बायस। एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद ये लोग भी हैं। फिर है हुमैरा खान है, फरजाना मोहसिन है, रोहिणी सेठ भी देख रही हैं। अनम शहाब ने भी लिखा है बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ चमक पत्ती। एंड शाहीन उस्मानी जी ने कहा है गुड इनिशिएटिव। आफ्ताब खान साहब हैं, उन्होंने कहा वेरी वेल कंडक्टेड फरजाना, नाइस टू सी यू। Farzana, if we have a few minutes, जी। maybe we can have like, you know, some interaction if any of the जी। participants want to ask each other something. हाँ जी, Yeah. आप लोग अगर कोई सवाल पूछना हाँ, चाहिए सहर हाथ तो उठा रही हैं। सहर, हाँ बताइए। जी, थैंक यू। मेरा सवाल डॉक्टर बुशरा से है आर्ट थेरेपी के बारे में और द इम्पोर्टेंस ऑफ मेन स्ट्रीमिंग आर्ट थेरेपी। तो किस हद तक कमर्शियल सेटअप्स जैसे गैलरीज होती हैं, जैसे अभी फॉर इंस्टेंस आर्ट दुबई जो आर्ट फेयर शुरू होने वाला है 16 मार्च से, हाउ ओपन आर दे टू हैविंग अ पार्टनरशिप विद एन आर्ट थेरेपिस्ट के उनको भी एक स्टॉल दिया जाए बैठने के लिए और सारे आर्ट विजिटर्स को बताने के लिए दैट there is some such thing as art therapy which should be explored by people who are in need of therapy. Because I understand your question. Coming to your question, the thing is already like the Dubai International Art Center and there is a Palette Art Gallery here in Dubai. They already did so many sessions with art therapy and workshops as well as classes. It's not that Dubai is not open to this concept, and they do understand. And as far as the you're talking about Art Dubai, the new the exhibition which is supposed to happen in March, so I was offered all this. But the thing is, I recently relocated from India to this place. So it is obviously you have to, invest a lot of money actually in these fairs and all yourself also if you're going to promote an art and a different new scale. So that's like a big challenge for at times. That is the only reason. Otherwise, I think they are very open to the concept. They understand it well, and there is a market for this here as well. So I have done art therapy sessions with on a national level with art galleries like Lalit Kala Academy. There was Awadh Art Festival, and there were people from all across the country, and they were present for the workshop. And also, I did a session of art therapy in Kalasrot Art Gallery in Lucknow when I was in Lucknow. So the response was good, and people wanted to learn how is art associated and how with therapy, how do you use it for your self-awareness and all these emotional enhancement and all that. So they were interested to be part of this workshop, to know more about it, how would they use it. So even in Dubai here, it's a good response here. So I've done the workshop, and this exhibition that you're talking about, it also, see, gradually things take shape. So you take step by step. So I'm just taking, many steps here, and I think that level will also be there. Once they know what the person is doing, they understand the concept, then they are always open to these things. बुशरा, हम चाहते हैं कि नॉट ओनली मतलब थेरेपिस्ट के अलावा भी जो आप जो है आर्टिस्ट हैं, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, ये जो दुबई आर्ट फेयर है या है, तो इसमें आप उन लोगों की हेल्प कर सकती हैं। उनको इंफॉर्मेशन देना है कि वो कैसे वहां तक पहुंचे और करे जिन लोगों को वो नहीं है। तो the art gallery like Palette Art Gallery here in Barsha, Dubai, already had taken one full space for artists. So they offered me this, that you could exhibit your paintings, you could do this. They already did my workshop. So the thing is, from my side only, I was a little overwhelmed with things over here because I'm just grounding myself and trying to find my feet here. So I myself declined the thing that I don't want to do it immediately. So the thing is that World Art Dubai already had given me this, because that gallery is one of the galleries which has tied up with World Art Dubai. Yeah, you actually just reminded me that I actually went to an exhibition. बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा है कि इस तरह से आर्ट प्रमोट कर रहे हैं। शहर से भी मेरा एक सवाल है, शहर अगर कोई आर्टिस्ट है, वेबन आर्टिस्ट है, तो वो अपने खुद को कैसे प्रमोट करे, कैसे आगे लाए अपने को, आप हमें जरा ये बताइए या लोगों को बताएं। जी, आजकल सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है। अर्लियर एटलीस्ट आई थिंक
maybe till up to before 5 years ago, galleries का बहुत stronghold होता है in discovering an artist, in promoting the artist. फिर उनके बहुत सारे strong contracts भी हो जाते हैं. Once you're successful, आप और बंध जाते हैं. They have such strong contracts कि आप किसी और फेयर में या किसी और गैलरी के साथ दिखा नहीं सकते. There's a lock-in period and all. So to kind of steer away from that, or to strike a balance, to not be bound by any single establishment in the industry, self promotion बहुत जरूरी है. और वो आजकल थोड़ा आसान भी हो गया है, because there is Instagram, there is Facebook. आप अपने pages set up करिए, आप रोज कुछ share करिए. Behind the scenes process is very interesting. People get very curious about जब आप कुछ behind the scenes process दिखाते हैं कि क्या artist का thought process है, और to conclude on what kind of artwork to make, and then the process of creation कि आप कैसे बनाते हैं, how do you finally get down to making your creative work. So self promotion becomes very important, but it's also very tiring. I would say it's 50% of your work. 50% of your work is making the art, and the rest 50% is self-promotion and finding people that whom you can partner with. इसमें like-minded लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है. Whether it's finding a display place, an exhibition space, or even a gallery space or a trunk show, that becomes very important. So that requires a lot of research. तो पहले की तरह नहीं है, पहले generation की तरह नहीं है जहाँ एक artist लगा हुआ है, बस काम किया जा रहा है, स्टूडियो में बंद है और कुछ नहीं कर रहे हैं आर्टिस्ट. They have to step out, be aware of the market, be aware of who their possible buyers can be, and what kind of partnerships and promotions they should find. And being active on social media today has become very important. It's as important कि आप communicate करें. I remember when I used to speak with आर्टिस्ट ऑफ द मॉडर्न आर्ट जनरेशन, जैसे जिनके मैंने नाम लिए थे. MF हुसैन साहब तो खैर बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बहुत दिलचस्प बातें करते थे, but there were others who chose not to. FN Souza would also talk a lot about his work, but then there was SH Raza, there was Tayyab Mehta. They were shy people, and they also felt कि हमने बना दिया आर्ट, काम हमारी तरफ से काम हो गया, आप देखिए और खुद समझिए इसे. But that doesn't happen today. If you're making something, you have to be as communicative about your work as well. कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपका पैशन क्या है, आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया, और आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं. So it's very important to be a talkative artist today. बिल्कुल सही कहा कि प्रमोशन बहुत जरूरी है. और अब तो इतनी फील्ड्स ओपन है, सोशल मीडिया, कितना आप उसको अच्छे से अपने आर्ट को आगे ले जा सकते हैं. डॉक्टर फराह उस्मानी, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है. इसके मौके पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है आज इस खवातीन के लिए. मैसेज क्या कहना आप चाहेंगी? हाँ, नहीं तो अच्छा, आर्ट के तहत ही कहूँ तो बिकॉज आज हमारा थीम यही है, आर्ट एंड सोशल चेंज. सो उसमें ये है कि वी ऑल्सो एज women need to value creativity, you know, and because we as mothers are saying कि तुम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर वो सब बनो. अच्छा, हमारे फैमिली की स्टोरी है. जावेद, my husband's nephew, he wanted to be a comedian after doing his undergrad here, and पूरी फैमिली में कोई आर्ट में कॉमेडियन नहीं था. सब बहुत ही पूरे प्रोफेशनल्स घूम रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब वो सब. So when this young boy, after his undergrad, he said that he wanted to be a comedian, the family was aghast. But then they counseled and they talked and they said, okay, we are going to give you 2 years. If you can manage to do it, otherwise तुमने लॉ का वो LSAT पास कर लिया एग्जाम, वो बैकग्राउंड में 5 साल तक ठीक रहता है, तो अगर 2 साल नहीं चलेगा तो तुम्हें वहीं जाना है. इस शर्त पे वो उनको कॉमेडियन 2 साल ट्राई करने को मिला. So the point I'm saying, the young man made it, and you may know him now. He's doing very well in the US as a comedian, and but the point I want to give the message is that we need to say, you know, give weightage and give privilege to the creative mind and the passion of the children
and to, you know, allow them to prosper in whatever field they want to go, and not put in our you know, had to say that you need to do this, this and this. Yeah, I wanted आपके यहाँ to तो आपने बहुत सही कहा कि वो बहुत ही फेमस हैं, जो जिनके बारे में आप कह रही हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं, और लेकिन आपके यहाँ तो IAS टॉपर भी हैं। नहीं तो उसी को तो उसीलिए तो वो बेचारे बच्चे को तो शुरू में काफी जबरदस्त मना हुआ था, and but you know, so the point I'm making is that we as mothers may also, you know, so my sister-in-law actually asked her brother, and there was huge talk at what to do with this young gentleman who doesn't want to go and become a lawyer where he's got all these marks, you know. So it is our responsibility that everybody is different, and you know, I want to also very quickly comment on what you said, Bushra. So I remember going to an art exhibition here, which was actually an exhibition of those who had done the workshops. So workshops जो थी therapy की, उनकी exhibition थी वो पूरी, and like with assistants they had done that, and it is still in my mind, this image of somebody who had migraine, बहुत सख्त होता है ना माइग्रेन का हेडेक, and वो ऐसी paintings थी where she had in this red and orange, you know, shown and written that no one is going to understand my migraine, no one is going to understand this, and this drawing this pain, drawing this has like helped me to cope with this migraine. Now it was so stark that I still, after years, when I listened to you, remembered it, and my awareness of somebody who says migraine has increased tremendously, कि तुम्हें खाली headache नहीं है, तुम्हें कुछ और है जो हो सकता है हम नहीं समझ रहे. So that is what we mean by this, you know, what we are saying about the social change aspect, is that sticks to the person, and never I am going to, if somebody tells me I have migraine, taking it lightly, because now I've read much more about it, and that image is there, you know. Similarly of this. Also, there's a really small effort, but I think I should mention, because we are in Lucknow city, and when we did it, and I saw Sangeeta's comment also. Sangeeta Bhatnagar is there. She was part of the team. So we did the first public art of, you know, a handicraft exhibit in a government office in Lucknow. Never there. I think it is still there and in good shape. So we wanted to promote the crafts of Uttar Pradesh, and they were like, you know, disappearing and all. So we curated 100 crafts from different states. That was the first list curated, and we put out this whole along the staircase of the office, like a very nicely curated exhibit, which was done about one of the colleagues or members of our group, and you know, who collected, because everybody was posted in different districts, and they got these handicrafts. And so it was like the first public gallery to create awareness on the handicrafts. And then we used to get like outsiders also coming to that office. It is the RTI Commission office, and to see this. So what I'm saying is that you know, there are ways in which awareness of public art is not there. Here, every office, every cafe will have wall to, you know, showcase it. And then sometimes I see as such a waste of space there, which could be used in ways. So there are many things we can do. But again, I'm really enriched by this lovely discussion. And we hope, you know, you also promote the exhibition that Farzana is curating from your networks. हाँ, बताइए. जी, हम ये चाहेंगे कि अब ये एग्जीबिशन हो रही है, इसमें और आर्टिस्ट आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना वर्क एग्जिबिट करें. सुबुई ने कराया है, और भी बुशरा भी अपना वर्क भेजें, और शहर का भी उसमें पार्टिसिपेशन होगा. और हम सभी से चाहेंगे कि एक एक लाइन पे अपना मैसेज इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर एक एक लाइन पे आप बोलिए. उसके बाद कुछ हम कैफी आजमी की कुछ नज्म की कुछ लाइन पढ़ेंगे. आप जल्दी से शहर आप बताइए. जी, मेरा बस यही मैसेज है. इट्स वेरी क्लोजली अलोंग द लाइंस ऑफ व्हाट सुबुही हैज सेड, कि जब आपका एक ड्राइव होता है, पैशन होता है, conviction होता है, just go ahead and do it, irrespective of the sounds around you, irrespective of the noise that is made around you. कि ऐसे नहीं कर सकते. आप सुबुही कुछ कहना चाहें? So it's just along the lines of go along with your conviction. Yes. जी.
I think हमने जो भी बातें वही आप करी क्या कहना हैं, they are चाहेंगे? so yes जी फरजाना मैम, हमने अभी तक जितनी बातें करी यहाँ सब बैठे हैं बड़े लोग, experienced लोग, लेकिन they are all so very synced with each other, so you can relate. सबकी talk एक दूसरे से they are so synced, बिल्कुल एक दूसरे में जैसे हो जाता है ना attached. It's like everyone is just doing for women की अच्छाई के लिए, उसे उसके अच्छे के लिए, उसके passion के, just to follow her passion. जी जी, आप थैंक यू। हाँ, थैंक यू सुबुई। हाँ बुशरा, आपको एक लाइन में कुछ आप इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। आपकी आवाज नहीं आ रही है आज, हौसले वक्त के और जीस्त के एक रंग है आज, आबिगानों में तपावान वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज हम हंग है आज, और जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो this was written by him years ago, and बुशरा, obviously this is something to which he wanted कि भाई औरतों को equal rights मिलने चाहिए हर तरह से, and the battle is equal for them in this world, so I think equal opportunity जरूर देना चाहिए औरतों को। जी जी, हम ये लास्ट में, हम अब टाइम कम है तो हम भी कैफी आजमी की ये लाइन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास उन्होंने लिखी थी, उस वक्त लिखी थी औरतों के लिए। कद्र अब तक तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क पिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है हर एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। और इसके अगर वक्त हो तो इसके आगे भी हम, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखर गमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, अपनी आजाद रविश में भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना ही है तुझे। डॉक्टर फराह उस्मानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस पैनल में जुड़े, और इतना डॉक्टर फराह उस्मानी का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और आखिर में हम चाहेंगे कि आप भी एक लाइन हमारे पूरे पैनल के लिए और हमारी तमाम खवातीन के लिए कुछ कहें। नहीं भाई, शुक्रिया आपका फरजाना फॉर योर लीडरशिप, and you know really you've really taken leadership of this initiative and to bring all these women artists. So aapko all the best, and we are looking forward, all of you, all of us, for this exhibit, bringing women together in their emotions, their thoughts, and yeah. आप म्यूटेड हैं शायद। म्यूटेड नहीं है जी जी। हाँ हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही जी। अच्छा जी, हमने कहा आप सबका बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू सो मच, और वंस अगेन हैप्पी विमेन इंटरनेशनल डे टू ऑल, और ऑल व्यूअर्स जो देख रहे हैं। थैंक यू आप सबको भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Actually Shaila is also there, so very happy International Women's Day to all. Can't really thank you Shaila, same to you, be on screen today as I'm extremely stuck. I just came back from Ooty, but I was listening to the wonderful and scintillating conversation going on. Really appreciate all the ladies out there, and stay artistic, keep shining. You all inspire us a lot. Thank you. Thank you, Shaila, for hosting us. And Shaila is our host for the weekly conversations, and we invite everybody to join every Friday on this weekly conversation. Okay, have a good evening. Yahan to abhi subah. Thank you, shukriya. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, good day. थैंक यू शैला कि आप इतना बिजी उसमें से निकाल के आपने ये इस प्रोग्राम को होस्ट करा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैला। नहीं मैम, ये हुक्म था, शामिल तो होनी थी। Okay, have a good evening. So we can leave this.